Ji, I assume recording has been started. So now, basically, if you recall last lecture, so we studied article section or article 1.3 and 1.4, and just to quickly, and at that time we said that we'll do some review questions today in the class. So let's start with those questions. But before those questions, I would like to um, quickly review some last topics. I thought कि throughput मेरा ख्याल है कुछ लोगों को they were asking questions last time too. So that's why I would like to revise throughput again so that you can have a better understanding of it. So in order to do that, let me share the slides first and then we'll talk about throughput. Okay, Ji, can you see the slides? I hope you can. So, throughput. Now, throughput again. Basically, if you look at the standard definition of throughput, it's amount of work done in a given time. We call it as amount of work done in a given time, right? So means that how much a person does work in 1 hour, in 2 hours, or 3 hours. So similarly, throughput in computer networks is a rate at which bits are sent. That's what is the rate? Rate means bits per unit time at which bits are sent from sender to receiver. Now there are two possibilities to find out throughput. There is an instantaneous throughput. That is a throughput at any given time, at any point, at any given point in time. Rate at which you can find out this at any given point in time. For example, what is the throughput at first uh, 10th second of it? That would be instantaneous throughput. First would be input throughput at 20th second or after 1 minute. So finding out throughputs at these different times are known as instantaneous throughputs. But when you will be averaging all these values together, then that is known as average throughput. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि आप उनको सम अप करना शुरू कर दें डिफरेंट टाइम पे जो थ्रूपुट चाहिए तो उसको हम एवरेज थ्रूपुट कहेंगे. Now if you look at this figure in slide 39, the slide numbering is shown at the bottom right of the slides. So basically there is a on your right side there is a client and on your left side there is a server. So now, and in between them, there is a router. So basically what is happening that clients send a request to the router through these links. These two links are given and their links capacities are different. For example, the link capacity from client to a router is RC bits per second and router to server is RS bits per second. So you can see here that RS bit per second and RC bit per second, and their capacities are different, and it depends upon the physical characteristics of the medium. Generally, physical characteristics of a medium, that how much capacity a medium has, carrying capacity a medium has. So you can think like this, that basically uh, here in this case, that this is a analogy point of perspective, that this medium or this link is can be thought of as a pipe that can carry fluid at a rate, at a certain rate. For example, this pipe is dia of this pipe is little bit less than comparison to the dia of this pipe right side. Look at my mouse movement, cursor movement. So dia pipe is greater. So which will have more carrying capacity, left pipe or right pipe? कौन बताएगा? Anyone? Right, the right Right one. pipe, because it has a more dia, right? So it is quite possible. The point here to you need to understand is that
it is quite possible that between client and server there may be one router is shown, but practically speaking there may be many routers, and naturally when there are many routers there are many multiple links between them. When there are multiple links, so each link may have a different carrying capacity, right? So you have to understand this thing. So that's why uh, it's important to understand throughput. Okay, so now we'll assume certain conditions. So the first condition is I'm at slide number 40. I hope you are viewing slide number 40. The first condition is RS is less than RC. So you see here that carrying capacity of RS, this pipe which is having RS bits per second is having less dia, small dia, and RC has more dia. So naturally RS capacity is less than the RC. So we'll call this as throughput. So average throughput, what do you think? Average throughput किस पे depend करेगी? कौन सी average throughput होगी? सर इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड कर दें। जी सम लेके, लेकिन देखें अब थोड़ा सा लॉजिकली देखें कि एक ज्यादा कैपेसिटी और एक कम कैपेसिटी है, तो जाहिर है कि इनपुट जो जाएगी वो यस सर कम पे डिसाइड होगी। तो इसमें जो एवरेज जो एंड टू एंड थ्रूपुट होगी दैट वुड बी आरएस। इट डिपेंड्स ऑन आरएस के आरएस, क्योंकि देखें इस आरसी बेशक इसका डाया ज्यादा है, इसकी थ्रूपुट ज्यादा, आरसी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है आरसी, लेकिन पीछे से जो कि डाया है उसका छोटा है, आरएस पे है, तो इसलिए वो इम्पैक्ट करेगा। Similarly, when RS is greater than what is the same thing. Now it depends upon RC. Right? So this is something which is there. So bottleneck, you can say that link is having link which is having a small capacity. अब देखें आपका ओवरऑल मल्टीपल लिंक्स लगे हुए हैं, एज्यूम करें आप यू हैव मल्टीपल लिंक्स और उनमें से लेट्स से कि 10 लिंक की कैपेसिटी ज्यादा है, मगर जो 2 लिंक्स हैं उनकी कैपेसिटी कम है, so you will not be able to get the higher capacity in that case, क्योंकि in between जो links हैं उनकी capacity कम है। So if you look at now, I will move to slide number 41. So if you look at this diagram, so this is a practical network scenario. Now generally speaking, these end systems, this is your network, main network has higher capacity. जो आपको मेन इंटरनेट का नेटवर्क है, जो बैकबोन नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, if you recall the structure of internet, बैकबोन नेटवर्क की कैपेसिटी ज्यादा होती है। यू लुक एट दिस आर, इसका डाया बहुत ज्यादा है ना, आर की थ्रूपुट बहुत ज्यादा है, बट द प्रॉब्लम इज एक्सेस नेटवर्क्स। ये जो जिस नेटवर्क के थ्रू आप बैकबोन पे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वी कॉल देम एज एक्सेस नेटवर्क। दे आर हैविंग smaller capacities. Look at this dia of this. They are having smaller capacities, RCs, RS. So the problem is here that when there are 10 connections and they are sharing backbone network link R per second. ठीक है, अब 10 connections are वो share कर रहे हैं. So the point here is that what would be the bandwidth or throughput in this case? This would be minimum of that. जिस तरह लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि RS और RC में से मिनिमम पे जो है वो थ्रूपुट निकल रही थी, ऐसी था ना, या RS और RC में से जिसकी मिनिमम थी उस पर थ्रूपुट डिसाइड हो रही थी। Here also look at this. Now 10 connections are shared, तो ये जो R है ये 10 के दरमियान शेयर हो रहा है, तो R by 10 हो जाएगा। एक कनेक्शन के जो थ्रूपुट है वो R by 10 हो जाएगी, ठीक है, बैकबोन नेटवर्क की। और ये अब मिनिमम इनमें से डिसाइड होगा, RC R by 10 और RS में से किसी भी क्लाइंट का पर एंड टू एंड कनेक्शन अगर आप लें तो उसका मिनिमम जो है वो डिसाइड होगा। मिनिमम क्या, RC है, R by 10 और RS, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जो है वो आपकी थ्रूपुट होगी। राइट जी, इज इट ओके? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बॉटलनेक कहाँ पे आती है? जो आपकी जो मेनली आपकी जो बैकबोन नेटवर्क है उसमें बॉटलनेक नहीं आती, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। बैकबोन नेटवर्क basically has a high bandwidth. Practical bottleneck is either on RC or RS. So if you can get a higher connection RC or RS, then you can you have more throughput, higher throughput. Okay जी, if you have any question you are welcome. सर ये RS जो है ये सर्वर है और ये जो नीचे एंड सिस्टम है सर ये दरमियान में क्या है, ये बता दें। बेटा ये देखें,
सर्वर्स आपके देखिए, आप थोड़ा सा इंटरनेट को, वो जो हमने शुरू में डायग्राम याद है आपको थी कि जो सर्वर्स और क्लाइंट्स आपके क्या हैं, एंड सिस्टम्स हैं, ठीक है। सर्वर्स और क्लाइंट्स क्या हैं, यस सर। एंड सिस्टम्स है ना, और फिर एज नेटवर्क पे है। ये सर्वर क्लाइंट्स कहाँ पे, नेटवर्क एज पे लाई करते हैं। और जो आपके ये दरमियान में आ रहा है, इसे कोर समझ लें, नेटवर्क कोर समझ लें, ये नेटवर्क कोर की बैंडविड्थ है आईएसपीज की, ठीक है। अब ये जो, अब जाहिर है कि आपके एज वाले जो हैं वो आपके जो नेटवर्क कोर से कनेक्ट होते हैं थ्रू सम राउटर होते हैं, थ्रू सम लिंक होते हैं। उस लिंक की जो कैपेसिटी है आर सी और आर एस की, जो उसको कनेक्ट करती है एज सिस्टम को, एंड सिस्टम को मेन नेटवर्क के साथ, उनकी कैपेसिटी जो है जनरली कम होती है, और वही बॉटलनेक होते हैं। ठीक है सर, समझ गया। यानी कि ये मेन जो आ रहा है ये इसमें राउटर और स्विचेस हैं। नहीं, ये अब यहाँ पे राउटर स्विचेस की बात नहीं हो रही, हम लिंक्स की बात कर रहे हैं। जो कोर नेटवर्क के जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर है या लिंक्स हैं, फिजिकल मीडियम है, उसकी बात हो रही है यहाँ, ठीक है। यस मेनली उसकी सर। बात हो रही है कि जो कोर नेटवर्क के अंदर फिजिकल लिंक होता है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर होती है और उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपके जिस तरह आपका होम नेटवर्क है, अब होम नेटवर्क से आपके जो इवन ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर की कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आप अपने होम पेयर से जो जाते हैं आईएसपी तक, वो कौन सा कॉपर ट्विस्टेड पेयर होता है एक्चुअली, और उसकी जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड है ड्यू टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। अगर आप उसको, अब जब रिसेंटली अब क्या हो रहा है, अब आपका होम टू फाइबर आ रही है, तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसको अपने जो लिंक है, जो आपका एंड सिस्टम आपका घर से जो आईएसपी फर्स्ट जो राउटर है वहां तक जा रहा है, उसको अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से रिप्लेस कर दें, तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, राइट जी। यस सर, समझ गया। हाँ, तो ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं, फिजिकल मीडियम्स हैं। इसमें राउटर जो है ना, वो राउटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे लिंक्स की बात हो रही है, फिजिकल मीडियम की बात हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो डायमीटर वाली बात नहीं मेरी थोड़ी सी समझ में आई कि जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी या जिसका कम होगा उसकी, ये बेटा डाया थ्रूपुट। ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा ना। यस सर। लेकिन मसला ये है कि आप पीछे जो पाइप लगा हुआ है उसका डाया कम है, और दरमियान में जो है वो, अब इसमें ये क्या है, ये यहाँ पे देखें, ये जो अब इस क्लाइंट को लें, यहाँ पे इसका डाया कम है, इसका डाया ज्यादा है, इसका डाया कम है। तो अब आपका इसका डाया ज्यादा होने का क्या फायदा, अगर आपका पीछे से फ्लूइड का जो आ रहा है जहाँ से, वो उसका डाया कम हो, तो वो तो कम ही आएगा। आगे बेशक आप जितना मर्जी बड़ा डाया लगा दें, ठीक है। यस सर। इश्यू ये है कि अगर तो आइडियली आपके जो तमाम जो लिंक्स है ना, उनका डाया बड़ा हो, आइडियली तमाम लिंक्स का डाया बड़ा हो, सेम हो और बड़ा हो, तो देन यू विल गेट द मैक्सिमम थ्रूपुट। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके लिंक्स, डिफरेंट लिंक्स के डिफरेंट डायाज होते हैं, डिफरेंट बैंडविड्थ। डाया से मुराद यहाँ पे बैंडविड्थ कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है। डिफरेंट लिंक्स की डिफरेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब डिफरेंट लिंक्स की डिफरेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये देखें मिनिमम, फिर उनमें से जो जिस लिंक का मिनिमम होगा वो थ्रूपुट डिसाइड करेगा कि एंड टू एंड कनेक्शन की थ्रूपुट क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल लिंक्स, वो थ्रूपुट होगी। यानी सर जितने मैक्सिमम उसके साथ कनेक्ट है उनसे डिवाइड करके हमारे पास सारों की मिनिमम आ जाएगी वैल्यू लिंक नहीं की। सारों की बेटा नहीं, अगेन डोंट कंफ्यूज दिस थिंग। सर 10 ये 10 अगर वो, कनेक्शन थे ना। देखें यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, 10 कनेक्शन शेयर हो रहे हैं, इसलिए हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे तो नहीं डिवाइड यस किया, सर। आरसी को तो 10 से नहीं डिवाइड किया, नो सर। क्योंकि अच्छा ये वो जितने। डेडिकेटेड था। तो देखिए ना, ओके सर। आरसी ये क्योंकि 10 के साथ शेयर हो रहे थे, इसलिए R/10। और आर एस ये ठीक है देखें, ये सर। आर एस वो भी यानी कि नहीं डिवाइड किया 10 मेन से। मेन कोर के साथ जितने कनेक्शन है इस वजह से हमने उसे 10 से डिवाइड किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ओके 10 सर। से डिवाइड किया। अगर एक ही कनेक्शन होता, देन अगर देखें आर ही ना, होना। तो फिर हम आर लिखते कि मिनिमम ऑफ आर सी आर एस और आर, अगर एक ही कनेक्शन होता है एक टाइम पे। तो नंबर ऑफ कनेक्शन 10 है, इसलिए आर को 10 से डिवाइड किया। ओके सर गुड। ओके जी। तो इफ यू एनीवन वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन, यू आर वेलकम। अदरवाइज this completes this discussion. Now have a look on this review question.
जी सर ये प्लीज तो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर क्यू डिलेज वगैरह, लिस्ट द डिले कंपोनेंट्स। जी हाँ, ये हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। यस सर, स्विचेस में, राउटर्स में होता है डिले, और नहीं ट्रांसमिशन में भी नहीं डिले हो रहा होता बेटा जी, ये वो 4 टाइप्स ऑफ डिले आपने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो 4 टाइप्स ऑफ है। डिले यस आपने सर, पढ़े, उनके नाम पता प्रोसेसिंग लिखे। डिले, क्यूइंग डिले, जी और ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले। ओके, इसमें से कौन सा वेरिएबल होता है? सर क्यूइंग डिले जो क्यूइंग होगा, वो वेरिएबल होते हैं। क्यूइंग डिले, ओके राइट राइट, ओके जी। Okay ji, is it okay to everyone? If you want to ask any supplementary question, you can ask. सर हमेशा ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग और प्रोपागेशन डिलेज फिक्स्ड हैं और क्यूइंग डिलेज क्यों नहीं फिक्स, यानी कि बेटा क्योंकि आपका क्यूइंग डिले डिपेंड करता है कंजेशन पे, नेटवर्क की कंजेशन पे, कि नेटवर्क कितना कंजेस्टेड है, कितनी ट्रैफिक नेटवर्क में से फ्लो कर रही है। और जो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक होती है वो वेरिएबल होती है। लेट्स से कि आपके नेटवर्क के अंदर कम ट्रैफिक है तो आपके राउटर पे ज्यादा कंजेशन नहीं होगी, आपके पैकेट जो हैं वो बफर बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बढ़ गई है, पैकेट बहुत आ रहे हैं, तो बफर ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जब बफर में पैकेट ज्यादा होंगे तो क्यूइंग डिले, उसको टाइम लगेगा ना उनको प्रोसेस करने में। अगर पैकेट बफर में पैकेट या क्यू में पैकेट कम है तो उनमें डिले कम लगेगा, इसकी वजह से वो वेरी करेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके जी, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव अ लुक ऑन इट, please try to solve this a little bit, paper pencil work is required, so please take 2 to 3 minutes and try to solve it.
Okay, ji, if anyone has done this, so please you can share your answer. Please let me know if anyone has done this. सर ये सिंपल D/S प्लस L/R होता है ना? क्या कौन सा डिले L/R होता है, कौन सा होता है? सर ये D/S जो होगा वो होगा प्रोपोगेशन डिले होगा, और L/R जो होता है वो हमारे पास होगा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन डिले। डिले। Right, right, right. Okay, जी. So let me show you the slash. So D/S के साथ this would be your answer, possible answer. So there are 4 questions are being asked in it. So these are the possible answers. ठीक है? Is it okay to everyone? सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, Yes. ये जो L जो है वो इन फॉर्म ऑफ बाइट्स है, 1000 बाइट्स लिखा हुआ है, और जो R है वो बिट्स में है, तो ये लग जाएगा इसी में, या दोनों को सेम भाई बिट्स में करना बेटा, पड़ेगा? बात सुनो, D/S में D में उसमें तो L/R की जरूरत ही नहीं है। तो ये D/S, यस सर। देखो ना, आपने निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स पैकेट, तो आपने प्रोपगेशन डिले निकालना है ना। तो D क्या है, D क्या है, व्हाट इज D? ये 2500 2500 किलोमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। यस सर। और S क्या है इसमें? स्पीड 2.5 × 10⁸ मीटर पर। तो D/S से निकल आएगा। सर अगर इसका ट्रांसमिशन डिले मैंने निकालना हो वैसे ही, क्यों ट्रांसमिशन तो डिले, क्वेश्चन में ट्रांसमिशन डिले क्यों निकालना चाहते हैं? आपसे तो पूछा है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दिया है, ट्रांसमिशन रेट यस टू सर। एमबीपीएस। आपको क्यों निकालना है? इस क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं गया ट्रांसमिशन रेट, वो तो कह रहा है, वो सर तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ तो फिर एल, एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन कर। पैकेट की लेंथ पता है इसमें, तो निकाल लें। ट्रांसमिशन रेट पता है तो L/R से निकाल लें। ठीक हो गया। एल जो है वो 1000 बाइट्स है, और ट्रांसमिशन रेट आपको पता है, लेकिन L/R उसने पूछा ही नहीं है। यस सर। पूछा नहीं है उसने L/R निकालें, वो तो वैसे ही उसने उसको दे दिया है डाटा, ताकि आप थोड़ा सा ठीक और हो करेंगे। डी वो प्रोपगेशन जो आपकी प्रोपगे टाइम जो लगता है ना पैकेट को लिंक से, वो D/S से निकलेगा ना। यस सर। ट्रांसमिशन डिले तो ये है कि वो जो उस नोड से लिंक पे आने तक का टाइम ट्रांसमिशन डिले है। टोटल जो सोर्स से डेस्टिनेशन है वो तो D/S पे है। ओके हो गया सर। ओके जी। और बाकी अगला जो D/S है, थर्ड ये है कि अब डज दिस प्रोपगेशन डिले डिपेंड अपॉन पैकेट लेंथ, तो आंसर क्या है? नो। नो, क्योंकि D/S में पैकेट लेंथ कोई नहीं आती प्रोपगेशन डिले में। एंड डज डिले डिपेंड अपॉन ट्रांसमिशन रेट? नो। नो, इट्स नो आल्सो नो, सर। क्योंकि ट्रांसमिशन रेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक सेपरेट फार्मूला है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेंस कि ये आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी चीजें बताता है। So this was the answer. Now, next question. Suppose host A wants to send a large file to host B. The path from host A to host B has 3 links. R1 का लिंक क्या है? ये अब आप जुबानी भी कर सकते हैं वैसे, बाय द वे, बट एनीवेज R1 का लिंक जो है वो
500 kbps का है, R2 का 2 mbps का है, R3 का 1 mbps है. Assume no other traffic is flowing. What is the throughput for the file transfer? Part A. You can do it, verbally. What would be answer for part A? Who will tell me? सर 500 kbps. 500 kbps, क्योंकि R1, R2 और R3 में मिनिमम क्या है? 500 kbps है, तो 500 kbps होगा पार्ट ए का आंसर. पार्ट बी का थोड़ा सा करें. अब उसमें पूछे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रांसफर द फाइल. पार्ट बी, प्लीज डू कैलकुलेशंस, little bit of calculations. सर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यानी कि 4 मिलियन को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. जनाब करके देखे, फिर आंसर निकाले ना, फिर तो मैं आपको बताऊंगा आंसर. मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा. थोड़ा सा खुद कोशिश करें. $32.768 second. Okay, we'll find it out. Anyone else? किसी और ने की है? ओके, सी का बताएं जी. बी को चलें, जिन्होंने कैलकुलेशन करनी है. जिन्होंने कैलकुलेशन करनी है, सी का क्या आंसर होगा? ये भी वर्बली हो जाएगा. ए का बताएं, रिपीट ए करें. सर थ्रूपुट जो होगी वो 100 kbps हो जाएगी ना, और बी पार्ट के अंदर वो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. यस ठीक सर. है, थ्रूपुट 100 kbps होगी और बी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ठीक है. Okay जी, we are, we don't have much time, so this is something which is you can find out. L by R. 400 मिलियन बिट्स को आप डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इट वुड बी, हाउ लॉन्ग का पूछा हुआ है तो टाइम निकलेगा. सर ये बी पार्ट का थोड़ा सा बता दें. एल देखिए सर ना, ये थोड़ा सा एरर है. 10 की पावर 3 है, 103 नहीं है. ठीक है, सर 10 की पावर 3 है या 6? क्यों? पीछे देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है. सर 400 मिलियन की जगह 10 रेज़ टू पावर 6 है और दूसरी जगह 10 रेज़ टू पावर 3 है. 10 पावर 3 होगा ना. सपोज अब आप देखें, डिवाइडिंग फाइल साइज बाय हाउ लॉन्ग इट विल ट्रांसफर द फाइल टू द होस्ट बी. तो मिनिमम पे आएगी ना. तो मिनिमम का क्या है? R1, R2 और R3 में मिनिमम क्या है? 500 है ना. तो R 500 ली गई है बेटा. यस सर, आपने फॉर्मूला भी बीच में बता दिया था क्वेश्चन बी के. हाँ, तो L by R से निकलेगा, तो ये 10 की पावर 3 है. 500 किलो है ना. यस सर, किलो को कन्वर्ट यस सर, किया गॉट आपने. इट. समझ गए हैं? अब ये L by R में R कौन सा लगाना है आपने? R वो लगाना है आपने जो मिनिमम है. तीनों लिंक्स में से मिनिमम क्या है? 500 था. यस सर. तो 500 वाला लगाएंगे, तीनों नहीं लगाएंगे.
सिमिलरली सी में भी इसी तरह का आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। किसी को कोई सर इश्यू है तो जी एक प्लीज गो अहेड। एक ही लिंक से सर हमने निकालना है, फिर ये सेकंड्स एक ही लिंक से निकाल लेंगे। बेटा ट्रांसमिशन जो है ना टाइम वो मिनिमम पे डिपेंड करेगा ना, एक ही पे निकालेंगे ना, मिनिमम पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। आप ट्रांसमिशन रेट ये तो नहीं हो सकता मैक्सिमम पे चला जाए, ये मिनिमम की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा सर ना। अगर हम तीनों उनको R1 R2 R3 को अगर एवरेज करके निकालें तो भी उससे यही आंसर आएगा, या फिर हमने मिनिमम ही से करना है? नहीं मिनिमम से एवरेज नहीं आता ना बेटा, मिनिमम पे थ्रूपुट निकलती है, मिनिमम पे निकलेगा। Okay ji, so this completes this review questions. So now we'll move to next topic. So let me share the slides and then we'll continue. Okay, where are they? Okay ji, now let's move to the last part of this chapter 1. Inshallah we'll finish this chapter 1 today, and we will have quiz next time from chapter 1. Okay, we will have a quiz next time from chapter 1. So the next topic is now look at this, how much we have studied so far in previous two lectures. We studied what is internet, what is protocol, net 1.1, 1.2, 1.3, and then we have also studied 1.4. So the next topic is security. So now we are going to study security, and then after this we'll study protocol layers, service models, and quickly review history of internet today. So inshallah we'll finish this chapter today. Okay, so network security. So let me tell you that it's a big issue these days. Network security. Why? Because when internet was invented in 1970s, um, at that time people thought that internet will be used between universities or research organizations only. Nobody at that time visualized that internet will be used by everyone. And at that time, because they thought that internet will be used between universities uh, or research organization, and they assumed that everybody is trusted, everyone is a trusted node, everyone is trusted. But when internet exploded, when internet was used by everyone in the world, then there are bad guys in it. So our assumption that you can trust everyone at that time when internet was invented was proven wrong. So therefore, there is a need of network security. There is a need of network security. So what is network security? So network security deals with how bad guys can attack computer networks. First thing, how we can defend the networks against those attacks. And the third thing is how to design network architecture such that it is immune to those attacks. So these are the three things which are referred in network security. So it's a big area. We are only studying it as a one section. Even people have written books on it, you know. So therefore, but again, this is the area because chapter 1 gives you overview of network and discussion. Without discussion on network security, this is not complete. This discussion is not complete. So the point here that I have already told you, the original version was that it looks now funny that the group will be mutually trusted users. Now this is not true. So now the point here is that now internet designers or internet protocol designers are trying to catch up, because internet was initially designed by assuming that
communication will be done by mutually trusted nodes, but that is not true. So therefore, now later on, this network security feature is being added into current network. Security feature is adding, so that's why it is written here that protocol designers are trying to catch up. So now these days security considerations are available at all layers. Now layers की बात आगे भी हम करेंगे. So this is something which you need to understand. So now bad guys, right? So let me tell you that what type of harm bad guys can give to or can can do in network. So the first thing which comes in is known as malware. We call it as malware. So malware, when we say malware, malware is of two forms. One is known as virus and the other one is known as worm. We call it as worm. So there is a delicate difference between virus and worm. So virus is active in nature. Virus is active in nature means that it can replicate itself when you get for example, email attachment, you get a file in email attachment and you execute that file. Whenever that file is executed and attachment is executed or opened, then this virus automatically self-replicate itself. On the other hand, worm is also a self-replicating infection. This is also a but it is a passive in nature. It self-replicates slowly by receiving object that gets itself executed. So the basic difference is that basically virus is something which is done actively, which is done in a fast way, but worm affects the system slowly. Now, then the third category is basically spyware malware. We call it a spyware malware. Spy, as you know, that it's kind of thing. जैसे हम जासूस कहते हैं, तो spyware बस what it does, it records keystrokes. जो कीबोर्ड से आप जो कीज प्रेस करते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है, या वेबसाइट जो आप विजिट करते हैं, या आप जो कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं into the network, it basically records those things. It does not harm anything, but it gets information from you. That what types of password, की स्ट्रोक प्रेस करने से आपको पासवर्ड पता लग जाते हैं, वेबसाइट विजिट करने से आपकी जो है वो आपका प्रोफाइल बिल्ड करते हैं और इंफॉर्मेशन पर्सनल कलेक्ट करते हैं. So this is known as spyware malware. And then when the next thing is that sometimes when a certain host is infected, then that can be enrolled in a network. Infected hosts, they are enrolled in a network that is known as botnet, and that is controlled by a hacker. That is controlled by a single hacker, and that network which is controlled by a single hacker is known as botnet, and this is used for sending spam messages, or even we will talk about this DDoS later on. Distributed denial of service attack means that you send lot of requests, legal requests to a server, and they are legal requests, but you send millions of requests and that millions of requests takes the server down, and this thing is known as distributed denial of service attack. So these are various categories of malwares which bad guys can do to the network. Okay ji, is it okay to everyone? सर ये इसकी यानी कि वॉर्म की एग्जांपल आप कोई बता दें, वॉर्म और स्पाईवेयर की. वॉर्म में जो है ना ऐसा हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस आपका सीडी के अंदर आपने एक यूजफुल प्रोग्राम लिया और वो उस प्रोग्राम के अंदर एक कोई छोटा सा जो है ना सॉफ्टवेयर बिल्ट इन है. अब वो प्रोग्राम तो यूजफुल है और आप सीडी के थ्रू आपने सीडी ली किसी से और उसके अंदर प्रोग्राम है या कोई डाउनलोड किया, प्रोग्राम इटसेल्फ यूजफुल है लेकिन उसके अंदर हाइड हुआ है वो वॉर्म प्रोग्राम, जिसे वॉर्म कहते हैं. वायरस जो है आपको ईमेल के थ्रू मिलता है, जनरली ईमेल के थ्रू, या आप लिंक को किसी को क्लिक करते हैं तब होता है. ठीक है, we'll go into more detail. So next slide. Now this is what we call denial of service. Denial of service.
Now look at this. That attackers, what they do, they make resources like server or bandwidth unavailable. ये server और bandwidth को unavailable to legitimate traffic by overwhelming resource with bogus traffic. आप क्या करते हैं कि बोगस ट्रैफिक जनरेट करते हैं और बोगस ट्रैफिक इतनी ज्यादा जनरेट करते हैं कि जो लेजिटिमेट ट्रैफिक है वो उसके लिए भी सर्वर्स जो हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं या बैंडविड्थ अनअवेलेबल हो जाती है. So this is known as denial of service attack. Let's have a look on it. Just to give you, this is a target. So basically they select a target system. So these are, bad guys. What they do, they break into hosts around the network. They break the host. बॉटनेट के बारे में हम फिर पढ़ेंगे. दिस इज नोन एज बॉटनेट के तमाम होस्ट को जो ब्रेक करते हैं और उनको एक नेटवर्क बना देते हैं, उसको बॉटनेट कहते हैं. एंड देन व्हाट दे डू, दे सेंड पैकेट्स एट द सेम टाइम टू फ्रॉम दोज कंप्रोमाइज होस्ट टू द सर्वर और टारगेट. व्हाट विल हैपन कि टारगेट पे अब ट्रैफिक जो है वो लीगल ट्रैफिक आ रही है, लेजिटिमेट ट्रैफिक आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रैफिक को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं एट द सेम टाइम कि वो टारगेट की हैंडलिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर जाती है. और जब टारगेट की हैंडलिंग कैपेसिटी से एक्सीड करती है तो वो सर्वर या टारगेट डाउन हो जाता है. तो बाकी जो लेजिटिमेट ट्रैफिक पे बाद में जो रिक्वेस्ट कोई और भेजना चाहे तो वो सर्वर डाउन हो जाता है, तो वो उसको रिप्लाई नहीं करता. दिस इज व्हाट वी कॉल डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. अच्छा मेरी क्लास हो रही है, अभी बात नहीं करें, ठीक है? ओके जी. Is it okay to everyone? Yes, sir. Okay. Now let's move to further things which bad guys can do. So the first one is known as packet interception, or we, in terms of network technology, we call it as packet sniffing. So what it does, that in broadcast media or in a common wireless medium is shared, right? This, look at this medium here. Look at my cursor movement, that this medium is shared between A, B, and C, right? Or it can be wireless or wired. So what will happen, that the network interface reads this C, which is a bad guy. It is reading and recording all the packets which are going from A to B, passing by from A to B. So this is known as packet sniffing. We call it as packet sniffing. For instance, and then what will happen? Look at this. Okay, B is sending a packet to A. Source is B, destination is A. So obviously this is a shared medium. So C also gets this. C also gets this. That bad guy also gets this. So then obviously it can read and record this thing, and this phenomena is known as packet sniffing. So there is a software available online जो प्रैक्टिस के लिए होता है, वायर शार्क सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये भी पैकेट स्निफर के तौर पे यूज होता है. Then next thing is we known as IP spoofing. This is known as IP spoofing. You know IP address. Everybody, I hope, assume that this is the address of every end system has an address which is known as IP address. More details will come later in this course. But what is IP spoofing? IP spoofing means that you are sending packet with a false source address. That actually you are claiming what you are not. Means that if one of you is, Ahmed, and he is claiming that the other one person also claims that he is also Ahmed, so the receiver will not be able to distinguish which one is who. For instance, I'll give you a small example that this is something which will happen. So recall that in last slide, basically what happened, that B sent a packet to A, so source was B, destination was A. So C listened to it, C got the IP address of the B. Now C is actually here sending the packet to A, but look at the source. So he got the address of IP address,
B. So now he is using source as B, but actually source is not B, source is C. So A will, misunderstand it, and A will assume that traffic is coming from B, but actually it is coming from C. So this phenomena is known as IP spoofing. Okay, Ji. Yes, sir. So these are the terms which you should be familiar with it: IP sniffing, IP spoofing. And this was a brief discussion of network security. So this is a question. I'll not ask answers from it from you, but just I'll show you the answer so that it can strengthen your concept. Because there is one new term, Trojan horse, is also used. So let's have a look on the possible answer for it. And if you then still have question, you can ask. So this is something, a difference between virus, worm, and Trojan horse. Okay, Ji. Let's move to the next question. Now, this is a botnet, which I, told you that I'll explain it to you. But this is just a question. I'll explain it to you how botnet is created and how it can be used for DDoS attack, distributed denial of service attack. Okay, let me discuss this. So, first step is that basically creation of botnet requires an attacker to find out vulnerability in some application of a system. That it basically, vulnerability means weakness in some application or system. So first thing is that the bad guy tries to, or attacker finds out that what is the weakness in the application or system. For example, you may be this is new term for you, but there is a buffer overflow vulnerability that might exist in an application. ये buffer overflow हो जाता है, ये एक weakness हो सकती है. But anyways, after finding out vulnerability, the attacker needs to scan hosts that are vulnerable. That around the world, it will find out that which hosts are vulnerable, which hosts are vulnerable to that weakness. And then target is basically to compromise series of systems by exploiting that particular vulnerability. तो बेसिकली इट विल टारगेट के कौन कौन से होस्ट हैं जिनको टारगेट किया जाता है, जिनके पास ये पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर. Once it get that those hosts, and then those hosts collectively become a part of a network which is known as botnet, and it basically become a network which is known as botnet, and that network botnet is controlled by a hacker or by an attacker remotely, and it directs the host in a botnet to send messages. So the point here is that important properties of such botnets is that originator of botnet can remotely control, as I already told you, and issue commands to all nodes in the botnet. And it becomes possible for the attacker to issue commands to all nodes, and then that consequently target a single node. जिस तरह मैंने अभी आपको वो एनिमेशन में वो फिगर दिखाई थी, आपको याद हो कि मैं तमाम नोड्स को जो है वो सेम टाइम पे ट्रैफिक भेजते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस में, जब मैंने आपको बताया था. So this is how basically a botnet is created.
सर वो डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर आपने बताया था ना बॉटनेट का, जिसके अंदर यानी कि वो मल्टीपल सिस्टम्स को जी हैकर जो बिल्कुल, होता है, बिल्कुल या ऐसे सर ही। उसे बॉटनेट कहते हैं? वो जब वो एक नेटवर्क, वर्चुअली वो एक नेटवर्क बन जाता है ना, जिसे एक अटैकर कंट्रोल कर रहा होता है, कंप्रोमाइज होस्ट, तो उसको बॉटनेट कहते हैं। ओके सर। सर मेन जो होता है सर्वर होता है सर, उसकी जॉब होती है यानी कि वो एंड सिस्टम को सिक्योरिटी देना? नहीं, सर्वर की कोई जॉब नहीं है, ये तो हर एंड सिस्टम को खुद अपनी सिक्योरिटी करनी है, सर्वर का कोई इसमें रोल नहीं है, इस तरह सर्वर की कोई जॉब नहीं है। तो सर फिर बॉटनेट का फायदा क्या होता है यानी? बॉटनेट का ये फायदा है कि आप सर्वर देखें, एक सर्वर है, उस सर्वर की हैंडलिंग कैपेसिटी है लेट्स से 100,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड में, ठीक है, 100,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड वो हैंडल कर सकता है एक सेकंड में। अब आप बॉटनेट बना लेते हैं और आप बॉटनेट से उसको 200,000 रिक्वेस्ट भेज देते हैं पर सेकंड, तो क्या होगा, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जब सर्वर पे आएंगी तो सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर सिक्योरिटी तो सर यानी कि बॉटनेट बनाने में यानी ज़रूरत होगी ना सर, यानी कि अब एंड सिस्टम को अटैक कर रहे हैं तो सर मेन तो पर्पस उसका ना, तो सर्वर से क्या लेना देना? बेटा सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस तरह करते हैं कि आप मिल के किसी को लेट से कि आप 10 स्टूडेंट मिल के किसी को मारना शुरू कर दें, तो उसमें आप कहेंगे जी मारने वाले का क्या लेना देना, इस तरह नहीं है ना। आपने ग्रुप क्यों बनाया, देखिए ना, although it's not a good example but just to give you an idea कि इसमें उसमें क्या लेना देना, स्टूडेंट का क्या लेना देना, तो कोई नहीं था, लेकिन इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुपिंग करके वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके अटैकर जो है वो बहुत सारे, एक्चुअली ये लीगल ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक लीगली होती है, रिक्वेस्ट लीगली होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम भेजता है जो सर्वर उसके लिए डिजाइन नहीं होता, तो उससे सर्वर को डाउन कर देता है। ठीक है, यस सर। सर मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 सिस्टम है ये चेक करने के लिए कि सर्वर की वल्नरेबिलिटी क्या है, तो उससे यानी नहीं रिक्वेस्ट नहीं, भेजते हैं तो यानी सर्वर की बॉटनेट मानते वल्नरेबिलिटी हैं? नहीं चेक की जाती, सर्वर की वल्नरेबिलिटी नहीं चेक की जाती, उन 10 सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी चेक की जाती है। बॉटनेट का पार्ट ना बने ना, वो वल्नरेबिलिटी अपने अंदर ना रखें और बॉटनेट का पार्ट ना बने। ये तो एक एग्जांपल है ना डीडीएस, अगर हो सकता है कि वल्नरेबिलिटी से वो आपकी हार्ड डिस्क को रिमूव कर दे, डिलीट कर दे, उसमें से डाटा जो कॉपी कर ले, फिर ये तो एक एग्जांपल दिया है ना वल्नरेबिलिटी की। देयर आर मेनी थिंग्स, जब वल्नरेबल होगा होस्ट, तो होस्ट को हैक कर दिया, तो उसको उस एंड सिस्टम के से बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसमें से की रिकॉर्ड कर सकता है, डाटा को डिलीट कर सकता है, मेनी थिंग्स कैन हैपन। ये तो एक एग्जांपल है। ठीक है, ओके जी, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। इन नेटवर्क्स हम x, इन मैथमेटिक्स हम कहते हैं लेट x एंड y आर वेरिएबल्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम सर्टेन स्टैंडर्ड नाम यूज करते हैं। So the names which are used in computer network literature are known as Alice and Bob and Trudy. So these three names are standard names which are used to give examples. Alice and Bob are the good guys and Trudy is a bad guy. So this is standard in network architecture, computer network literature. Alice and Bob are good guys and Trudy is a bad guy. Now here, in this case, suppose Alice and Bob are sending packets to each other over a computer network. The good guys. Suppose Trudy position herself in a network so that she can capture all the packets sent by Alice and okay, and send whatever she wants to Bob. She can also capture all the packets sent by Bob and send whatever she wants to Alice. So list some of the malicious things Trudy can do for this position. जी क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं? सर वो स्निफिंग कर सकता है यानी कि आईपी स्निफ बिल्कुल, कर सकता स्निफ करके तो वो अब बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता है कि वो एलएस है,
या सर आईपी अपने आप को, स्पूफ भी कर सकते हैं। हाँ, और अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं, बॉब है, तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन हैपन, so have a look on this. So Trudy can pretend to be Bob or to Alice and vice versa, and can completely modify the message being sent from Bob to Alice. So there is example given. Okay, ji, is it okay to everyone? Now let's move to the next topic, which is a very important topic in this sense that it will introduce you to the concept of layers, and relevant discussion will be done in this topic. So obviously, I assume you are concentrating on lectures, on a lecture, but please be mentally present also. And this is a big issue in online classes, that I cannot see you whether you are mentally concentrating or not. So anyways, let's move to this next topic, which is protocol layer service models. So now, networks basically are very complex entities, and it has many pieces. System pieces means that many devices in it. For example, you have learned in this chapter there are hosts, routers, links of various medias. There can be copper, there can be a coaxial, there can be optics, there can be a radio link. Then there are various categories of applications. Then there are protocols, there is a hardware and software. So you can understand that considering all these pieces, network is a complex entity. Now the question is written on the right side, that is there any hope of organizing structure of network, or at least over discussion of networks? So answer is yes, we can organize this structure of network by using these multiple pieces in a certain way, and which we are going to look into in forthcoming slides. So, in order to understand this, I will consider analogy, and the analogy is of air travel. Analogy is of air travel. There are certain assumptions taken in it, but again, analogy you cannot make analogy 100% same as of your actual phenomena, but again it will give you a significant idea to how to understand the concept which is under consideration. So let's take an example of air travel. Air travel is also a complex phenomena. Why it is complex? Because there are series of steps in it, and there are many services are involved in it. There are many services are involved in it. So let's have a look on it, that what are the series of steps and how many services are involved in it. Okay. So look at this now. So the first step in air travel is you purchase a ticket, right? The first step, ticket purchase. So we call it as purchase. And once you get a ticket, then you basically suppose that you have got this ticket from airport, okay, from a counter which is used to sell tickets. You purchase a ticket from that counter, and then after getting the ticket, now you go for a baggage check. Means that whatever baggage you have, you will check, means here that you will give it to the airline company so that they can place it in the airplane at a specific compartment which is used for carrying a baggage. So this phenomena is known as baggage check. Okay. Then after doing baggage check, what you will do?
you will go to gates loading. That means you will go to the gates where from where you can go to the airplane, and that phenomena is known as loading or gates loading. And after you get inside the all the passengers, they go into the airplane, then the next step is takeoff, runway takeoff. Plane takes off, and then naturally you are going to a certain destination. So in order to reach destination, your airplane routing is done. And airplane routing means that, let's say you are going from here to, let's say, Singapore. So obviously it will first move towards north and then east, then west, whatever it is. And eventually this phenomena is known as airplane routing. Okay. Then on the other side, once it arrives at destination, what will happen? That basically landing is done. Runway landing phenomena is done. Then gates unload means unloading the passengers. That passengers will come out from airplane. This phenomena we are calling it as unloading or gates unloading. And then baggage claim. That you booked your baggage, you checked your baggage at the other side. Now you will claim your baggage, you will get your baggage. This phenomena is known as baggage claim. And if you have any issue during travel, you can complain. Ticket complaint is also possible. So these are the series of steps in an air travel. Have a look on it, and if you have any question, you can ask. Okay, जी. Is it okay to everyone? कोई question है किसी को? So basically, if you look at this, that there are many things you can say. That runway takeoff and runway landing is done by pilot, right? So there are different entities involved in it, and gate loading and gate unloading is done by different persons, and similarly baggage check and baggage claim is done by different persons, and similarly ticket purchase or ticket complaint is done by different set of persons, right? Now suppose that ticket person, and they are doing their task independently. They are doing their tasks independently. Suppose that baggage check or claim person becomes sick. So what will happen? So simply they will replace the sick person from other person, right? And baggage process will continue. But does it affect the other services if baggage person is changed or replaced? आपका क्या ख्याल है? इसका कोई इफेक्ट होगा बाकी सर्विसेज पे? No, sir. So answer is no.
एंड इवन अदर सर्विसेज इवन डोंट नो कि बैगेज पर्सन इज चेंज, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं है। देखें अदर सर्विसेज जो हैं उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि बैगेज पर्सन कौन है, और वो चेंज भी होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो बैगेज पर्सन चेंज भी उनको पता ना हो। as long as the services are provided, they are not bothered by this fact कि who is providing the services, they simply need to get those services कि baggage की services हासिल करना जरूरी है, बाकी पर्सन कोई भी हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Similarly, let's say the pilot has become busy, so it will be replaced by other pilot, will affect it, it will affect the other services? The answer is no, it will not affect any other services as long as pilot is there, whoever it is. Now this is something which you need to understand. So this air travel in this context is a series of steps. There are series of steps, and it involves many services in it, right? But as long as those services are provided, then change in each service will not be a matter of issue to other services. Change of persons or something like that. Suppose that now that the baggage check was done by a person who was very slow, a slow person, and he was taking a lot of time to do a baggage check. So what the persons who are responsible for baggage check, they say okay, he's a slow person, so they replace it with a person who does it in a fast way. So in this way, that change will affect the overall services. Another thing, but that thing is that similar concept can be applied to a protocol or software कि आप एक स्लो प्रोटोकॉल को चेंज कर देते हैं फास्ट प्रोटोकॉल से, बट इट विल नॉट अफेक्ट द अदर सर्विसेज. So in this context, let me move to the next slide. So this is what happens. So we, there are series of steps are happening in airline, air travel. So we will call them as layers. These series of steps, we can think them as of layers. That these series of steps or modules are done in a systematic way, and each step or is known as layer, right? Now layer is a standard term. अब आपको ये समझना है कि कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में हम लेयर कहते हैं. लेयर, हर लेयर क्या करती है? एक लेयर को आप एक मॉड्यूल भी समझ सकते हैं या ग्रुप ऑफ सिमिलर टास्क का एक सेट भी समझ सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हेयर हम कह रहे हैं कि ये जो है एयरप्लेन राउटिंग जो है इट्स अ लेयर. सो हाउ मेनी लेयर्स? एयर रनवे ट्रैफिक इज आल्सो डन, टेक ऑफ और लैंडिंग इज डन इन अ लेयर. Gate, loading, baggage. So 1, 2, 3, 4, 5 layers in air travel. We can consider like this. So each layer is implementing a certain service. For example, runway takeoff layer is implementing a certain service. It is used to take off the plane. So what is happening that this service is implemented via its internal layer actions. And then second thing is that it is relying on the services provided by layer below it. So you need to understand a term layer. It is a very important term and you need to understand it. Have a look on it. If you have any question, you are welcome. सर ये इस डायग्राम में टोटल 11 लेयर्स हैं या 5 लेयर्स हैं? ओके, अब मैं इसमें एक बात बताऊं कि एक होती है, हम इन्हें कहते हैं कि ये देखें, ये जो हम इसको लेयर को एक ही समझेंगे, वर्चुअली दे आर सेम लेयर्स. टिकट परचेज और टिकट कंप्लेन की, ये सेंडर साइड पे है, ये रिसीवर साइड पे है लेयर, लेकिन ये एक ही लेयर होगी. सो ईच लेयर इज कैपेबल ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टिकट परचेज दिखाया है ना इस साइड पे, और इस साइड पे हमने टिकट कंप्लेन दिखाया है. तो अब ट्रैवलर जो है लेफ्ट से राइट को ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ही है. तो इट इज आल्सो पॉसिबल कि राइट से लेफ्ट ट्रैवल करे. तो ये आपको आसानी के लिए दिखाया कि एक साइड पे परचेज, एक साइड पे कंप्लेन है, लेकिन हर लेयर जो है वो दोनों एक्शंस कर सकती है. फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट पे परचेज वाले टिकट परचेज है, ये कंप्लेन भी कर सकती है. अगर ट्रैवलर जो है लेफ्ट राइट से लेफ्ट आएगा तो ये कैपेबल होगी परचेज एंड कंप्लेन.
सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो टिकट की जो लेयर है ये एक लेयर है जो कि इंप्लीमेंट की गई है सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी। ओके यस सर। इसी तरह बैगेज की एक ही लेयर है, इस तरह आप काउंट करेंगे, बैगेज की भी एक ही लेयर है, एक ये सेंडर साइड पे वो चेक यूज कर रहे, चेक के लिए यूज हो रहा है, रिसीवर साइड पे क्लेम कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर सेंडर इस साइड से होगा तो यहाँ पे वो क्लेम करेगा, यहाँ पे चेक करेगा। तो बैगेज की एक ही लेयर है चाहे वो जहां मर्जी इंप्लीमेंट हो रही है। इसी तरह गेट्स की एक ही लेयर है, तो इसी तरह रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग की एक ही लेयर है, इसी तरह एयरप्लेन राउटिंग की एक लेयर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी लेयर्स होगी हमारे पास? 5 सर। 5 यानी कि लेयर्स। इस तरह से सर ये कह सकते हैं कि यानी कि एयर ट्रैवल के अंदर टोटल 5 लेयर्स हैं, या एयर ट्रैवल प्रोटोकॉल के अंदर 5 लेयर। जी बिल्कुल। नहीं, प्रोटोकॉल तो ये है कि हर लेयर के अंदर प्रोटोकॉल होगा। तो आप कह सकते हैं कि एयर ट्रैवल के अंदर 5 लेयर्स हैं और हर लेयर का अपना प्रोटोकॉल होगा। ओके सर। हाँ, तो लेयर के अंदर प्रोटोकॉल होता है, ज़ाहिर सेट ऑफ एक्शंस होते हैं ना, हर लेयर ने कुछ एक्शंस करने हैं, वो थ्रू सर्टेन प्रोटोकॉल करेगी। So you can say कि air travel consists of 5 layers and each layer is implementing a protocol to give certain services. तो सर लेयर को सेट करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होगा सर? ये एक यानी डिफाइंड प्रोसेस है ना, तो सर ये इसके लिए नहीं, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इसके लिए कोई सेंट्रल प्रोटोकॉल नहीं होता। ये तो अगेन इट्स अ एनालॉजी, बट अगेन द आंसर टू इट इज देयर इज नो सेंट्रल प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड टू फॉर सेटिंग, और होता भी नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है जी, नोमान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन पूछा करें बाकी लोग भी प्लीज। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम क्विज होगा, तैयारी करनी है सब लोगों ने। ठीक है सर। सर क्विज जो है वो थ्योरी टाइप होगा या कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे? बस ये बुक में से होगा, पहले चैप्टर में से होगा, अब ये नहीं बताना आगे पढ़ें सारा कुछ, ये तो नहीं सर बताते ना। एमसीक्यू बेस्ड होगा? ये भी आपको पता लग जाएगा, कैमरास अपने ऑन रखने हैं, कैमरास को अपना रेडी रखना है, ठीक है, बस ये रिक्वायरमेंट है, कैमरास आपके रेडी होने चाहिए। So you need to turn your cameras on while doing quiz. बाकी चैप्टर को पढ़ें, सारे चैप्टर को, और उसी में से होगा क्विज। सर एक्सरसाइज से सिर्फ रिव्यू क्वेश्चन करना है या प्रॉब्लम्स भी? जितना आप कर सकते हैं कर रहे हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है चीजें। पहले चैप्टर की प्रॉब्लम्स भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बाकी अगले चैप्टर में आपको सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स में दूंगा, बताऊंगा। सर इसमें कुछ में कोड्स वगैरह नहीं आता? मैं इसलिए कह रहा हूँ जितना पॉसिबल है वो कर लें। ओके ओके जी, लेट्स कम बैक टू दिस स्लाइड अंडर कंसिडरेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इस पे कंसंट्रेट करें प्लीज, लेयर्स के बारे में। Okay ji, now let's move to our real example. So this is just an animation. So ticketing service, this is a layer. Baggage service, another layer. Gate service, runway service, routing service. Right? So can you describe in words that the service provided in each layer above? For example, ticketing service क्या जो है वो, टिकटिंग लेयर जो है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है? सर टिकट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नहीं, परचेज एंड क्लेम, बोथ सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स परचेज एंड क्लेम ऑफ टिकट। सिमिलरली बैगेज सर्विस, बैगेज लेयर क्या प्रोवाइड कर रही है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है? बैगेज चेक चेकिंग एंड एंड
क्लेम, बोथ ये चेक एंड क्लेम दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। सिमिलरली यू कैन आल्सो डिस्कस अबाउट अदर लेयर्स। Okay जी, so the question is why layering? So actually what you have done कि air travel जो कि बड़ी complex entity थी, आपने उसको, अब मैं layers कहूँगा, आपने उसको layers में divide कर लिया। अब क्यों layer में divide किया? अब उसकी reason है, आप अपनी explicit structure, why we deal, when we deal with the complex system, it has a explicit structure. So we want, we want to allow identification, and there is a relationship of complex system pieces. So in order to do that, we divide it into layers. और layers actually क्या है कि आपने मॉड्यूलराइजेशन कर ली। मॉड्यूलराइजेशन से फायदा क्या होता है कि it helps in easy maintenance, and then you can update the system. जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर बैगेज पर्सन को आप चेंज कर दें तो उस अपडेट का बाकी लेयर्स पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा अगर आप इंटरनली बैगेज पर्सन को चेंज कर दें? नो सर। So it will have no effect. So this is a benefit of it. You can update the internal protocol in any layer without disturbing others. So this is a benefit. So change in layer service implementation is transparent to rest of the system. जिस तरह मैंने example दी कि आपने person को change कर दिया. Another example is given. Let's say कि आपने change कर दिया gate का procedure. अब आपने गेट का प्रोसीजर चेंज कर दिया तो इट विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। आपने कहा जी हम पहले, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हम पहले जो है वो बूढ़े लोगों को जहाज में बिठाएंगे और फिर हम बाकी लोगों को बिठाएंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी लेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेस्ट ऑफ द सिस्टम पे। अच्छा, आप ये कहते हैं कि हम पहले जो है वो लंबे लोगों को बिठाएंगे, फिर जो हाइट में दरमियाने लोगों को फिर हाइट में, तो क्या फर्क पड़ेगा? Rest of the system will not affect anything, right? So but the benefit is this dividing the complex system into layers helps us in maintenance, in updating of system. For example, updating individual layer will not affect the working of other layers, और maintenance भी आसान हो जाती है जब आप divide करते हैं चीजों को layers में, right जी? So the last two questions, is layering considered harmful? So we have discussed a lot of benefits of layering. So is there any, can you give any reason by virtue of which you can say that layering is harmful? Anyone? नो सर, हार्मफुल नहीं है। Okay, well, I mean, maybe your preliminary knowledge से आप कह रहे हैं कि harmful नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना आपके amount of work जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। Briefly, if I tell you amount of work involved is more in comparison to, अगर आप let's say कि एक ही person है, suppose although it is ideally it's not possible practically, suppose करें कि airline travel में एक ही person है जो ticket claim भी करता है, एक ही पर्सन है जो बैगेज भी चेक करता है, एक ही पर्सन है जो बाकी सर्विसेज भी देता है, राउटिंग भी करता है, एयरप्लेन की राउटिंग भी करता है, सेम पर्सन है। तो इससे क्या होगा? एयर ट्रैवल की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, मल्टीपल पर्सन। यस सर। सो द पॉइंट हियर इज, आई मीन लेयरिंग के अंदर ओनली इशू इज दिस के अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजेस और आपका ओवरहेड बढ़ जाते हैं, ये इसके डाउन साइड है। तो मोर डिटेल्स विल कम लेटर ऑन, जब आप एग्जैक्ट लेयरिंग पढ़ेंगे फिर आपको एग्जैक्ट आइडिया भी हो जाएगा। तो सर ये आपने एग्जांपल किस तरह दिया, यानी कि एक ही बंदे को काम करना पड़ता है, लेयर्स तो उतनी ही रहेंगी ना सर? यानी कि उसकी रहेंगी, बंदे कम हो जाएंगे ना, आपका एक ही बंदा सारे स्टेप्स कर रहा है। लेकिन सर अगर लेयर्स ना करें तो भी तो उसे ही करने पड़ेंगे सारे स्टेप। तो ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं, तो आपने हर लेयर के लिए सेपरेट बंदे नहीं इन्वॉल्व किए हुए, मैंने तो एग्जांपल दिया ना, सेपरेट बंदे इन्वॉल्व किए हुए ना। तो यानी कि ये लेयर का मतलब ये रिसोर्स ज्यादा लेती है। इन अ सेंस आप कह सकते हैं रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं आपको, ओवरहेड इसका ज्यादा होता है। अभी अगेन बेटा, आई मीन these are the examples given with respect to analogy again.
अभी आप लेयर्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे रिसोर्सेज ज्यादा लेती है, कैसे ओवरहेड ज्यादा होता है, ओवरहेड ज्यादा होता है इसका। तो क्या ओवरहेड होता है ये अभी आपको पता लगेगा बहुत जल्द है। So we are not very much interested in digging out the detail of airline travel. वो तो एक एग्जांपल थी, एनालॉजी थी आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। ओके जी। So you can also Yes, sir. think of layering in other complex systems. Because of shortage of time, I will not ask you to think of layering other complex systems, but it also exists layering. Now let's move to the internet layering. Internet के अंदर layering कैसे होती है? So actually this slide which you are seeing here, it basically describing 5 layers for a internet protocol stack. We call it as internet protocol stack, and it has 5 layers. It has 5 layers. You are seeing there, and these layers are numbered like this. That physical layer numbering is done from bottom to top. Physical layer is layer number 1. Link layer is layer number 2. Network layer is layer number 3. Transport layer is layer number 4, and application layer is layer number 5. Numbering is fixed. डोंट एवर काउंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने कभी भी एप्लीकेशन लेयर को लेयर 1 नहीं कहना, आपने हमेशा लेयर 1 कौन सी होगी? फिजिकल लेयर होगी। नंबरिंग हमेशा बॉटम से शुरू करनी है। कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज फिक्स्ड इन नेटवर्क टर्मिनोलॉजी कि लेयर 1 इज ऑलवेज फिजिकल लेयर, लेयर 2 इज लिंक लेयर, लेयर 3। तो नंबरिंग आपने बॉटम से स्टार्ट करनी है, राइट? चाहे आप ऊपर से पढ़ें तो लेयर 5 क्या है? कौन सी लेयर है 5? एप्लीकेशन। So layer 5 Application is an layer. application layer. So internet protocol stack consists of 5 layers. So we'll take a break here, prayer break here, and after break we'll come back and then we'll continue further, right? So 15 minutes, around 15 minutes break. So after that we'll come and we'll continue our discussion, right ji? So let's have a break.
ओके जी, सब लोग आ गए वापस? जी, कैन यू हियर मी जी? सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर, आवाज आ रही है। Yes, sir. So, is Iman Gul here? Roll number 140. Okay, she is absent, I assume. जी, नोमान? नोमान, क्या आप आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आवाज आ रही है आपकी। तो ये चेक करें, ये ईमान गुल 3 क्लासों में से 2 क्लासेस में नहीं आई। सर नुमान ने मैसेज किया था, उसका नेट इशू है, इस वजह से नहीं वो बोल रहा। वो मैसेज किया था उसने ग्रुप में, कहता सर को बता देना अगर पूछे। चलें ठीक है। और आयशा तैयब, इज शी हियर? जी सर, मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रही हैं कि उनका भी लैपटॉप का माइक काम नहीं कर रहा। नहीं वो सर मैं ओके सर मैं उनसे कहती हूँ कि वो फोन से या किसी और डिवाइस से कनेक्ट करके आपको बता दें। नहीं, मैं तो फिजिकल ओके जी सर। ओके ओके जी ओके सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स रिज्यूम नाउ। बेसिकली let me share the slides first and then I'll we'll discuss further. So I hope now you are viewing slide number 18. So we were basically at this layer, slide number 20. So as we were saying that basically our internet protocol stack consists of 5 layers, right? And these layers are known as application layer, transport layer, network layer, link layer, physical layer. So which layer is layer number 1? Physical layer. Ji? Physical layer. Now which layer is layer number 5? Application. Application layer, right? Now basically so we were saying that our internet protocol consists of 5 layers, and the 5 layers are known as physical layer, layer number 1, link layer, layer number 2, network layer, layer number 3, transport layer, layer number 4, and application layer, layer number 5. So we'll start discussing this from layer 5, that is application layer. So the purpose of brief, we will discuss the brief of these layers working. Otherwise there are chapters for these layers. So chapter 2, which you are going to study inshallah next week, basically talks about application layer. Similarly, chapter 3 studies, you will study in chapter 3 about transport layer, and then chapter 4 you will be studying about network layer, and link and physical layer are discussed in chapter number 6. So here we will be going to discuss them briefly, very briefly. That application layer, basically the purpose of application layer is to support network applications like up web browser जो है basically an example of a application layer. So in using web browser you access the application layer actually, and in the web browser you use a protocol which is known as HTTP, hypertext transfer protocol. This is one of the example of application layer protocol. And the other protocols which are used, for example, for mail protocol is G, please बोल लें
सर वो मैंने पहले लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ था तो मैं प्रेजेंट हूँ 18A56। नाम क्या है बेटा? आयशा तैयब। Okay, okay. Okay, so application layer, other example protocols are SMTP, uh, simple mail transfer protocol, and there is another email protocol which is known as IMAPs. So these are the examples of protocols at application layer. Then there are separate, basically, so messages are generated at application layer. The data unit at application layer is known as message. And then comes transport layer. The next is transport layer, which is layer number 4 in internet protocol stack. And basically, it is responsible for process to process data transfer between source and destination. Process to process data transfer. So the protocols which are used in transport layers, there are two main protocols, and they are known as TCP and UDP. Transmission TCP stands for Transmission Control Protocol, and the UDP is User Datagram Protocol. After this, the layer 3 is basically network layer, and this is responsible for routing of datagrams from source to destination. Now you have to keep this thing in mind that in a system, you may have, in a computer, you may have 4 processes, you may have 5 processes. ठीक है? For example, आपने 5 tabs खोले हुए, 5 tabs खोले हुए हैं, और वो tabs different websites को जा रहे हैं, तो ये वो 5 tabs are actually 5 processes. ठीक है? तो process to process communication is a responsibility of transport layer. लेकिन जब नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो इट इज अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक, अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक कंप्यूटर के अंदर, एक एंड सिस्टम के अंदर 5 प्रोसेस हो सकते हैं, तो प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर is a responsibility of, or system to system is a responsibility of, communication is a responsibility of network layer. So basically datagrams are routed from source to destination, and the main protocol which is used in it for routing of datagrams is known as IP, Internet Protocol. And there are also, in addition to IP, there are other routing protocols which are also used. So again, when we'll study this chapter, we'll go into more detail of it. Then next layer comes in, known as link layer. We call it as link layer. So it is responsible for data transfer between neighboring network elements, hop to hop delivery. Recall in last lecture we defined hop. क्या होता है hop? कोई बताएगा कि hop क्या होता है? सर हॉप का पूछ रहे हैं? जी जी, हॉप। सर ये डिस्टेंस होता है एक राउटर से, फॉर एग्जांपल राउटर से लेके एंड सिस्टम तक जो डिस्टेंस होता है लिंक, उसे वन हॉप कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स को वन हॉप कहते हैं। इस तरह आप बताएं तो बेहतर है। सो नेबरिंग नेटवर्क एलिमेंट्स, जब नेबर होंगे तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, राइट? नेबर जब हम होंगे एलिमेंट्स तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो हॉप टू हॉप डिलीवरी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिंक लेयर, and basically the protocols which are used at link layers are, some of the protocols are Ethernet is one of the example. Then there are Wi-Fi. In IEEE terminology it is known as 802.11. Again we'll study it in a chapter 6, but anyways, then there is a point-to-point protocol, PPP. Then comes the layer 1 is physical layer, and physical layer is responsible for transmission of bits onto the physical wire. So your wire, the physical medium is connected to physical layer. Your medium is connected to physical layer, and its responsibility is to transfer those bits which are generated to the wire. Now you may be wondering that where these layers are implemented. Physically कहाँ पे होती है ये layers? So let me tell you that application layer, transport layer, and network layer, they are implemented in software, and they are part of your operating system, network operating system. Okay, they are part of, in your computer, they are generally implemented in software, and they are part of your operating system. The link layer and physical layer, they are basically a part of हार्डवेयर जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है. Primarily they are basically a part of your network interface card.
मैंने आपको दिखाई भी थी शायद गालिबन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब हम केबलिंग पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट लेक्चर में, पहले या दूसरे लेक्चर में जब फिजिकल मीडिया पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो। तो लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर बेसिकली इम्प्लीमेंटेड ऑन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हार्डवेयर में प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड होती है। So this completes the brief description of this internet protocol stack. Please review this, and if you have, I'll give you 2 minutes for it, and then if you have any question, you can ask. Okay, ji, any question? If you have any question, anyone wants to ask any question about it, welcome. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। No, sir. Okay, ji, if you don't have any question, so now let me give you an example how these layers collectively work. So before I move to the explanation of it, let me tell you that implementation of layers in a system and system or your computer has all 5 layers implemented in it. All 5 layers are implemented in computer, laptop, desktop, or even your mobile phone, smart device, whatever it is. All 5 layers are implemented in end systems. And systems generally have all 5 layers implementation in it. As far as these devices are concerned, the devices other than NAND systems like switch and router. So switch is having a implementation of 2 layers. As you are seeing here, look at my cursor movement. So switch is only implementing layer 1 and 2, physical and link layer. So what does it mean? That it does not have implementation of above layer like network layer, transport layer, application layer is not present in switch. On the other hand, router has only 3-layer implementation. Physical link layer and network layer is implemented inside the router. Now by virtue of this property, हम इसे कहते हैं कौन सी the highest layer जो router के अंदर implement होती है, कौन सी layer number है? Network. Layer numbering point से 1 to 3 3 कौन सी layer है ये? 3 Layer 3. So by virtue of this, we also call router is a layer 3 device. Router is a layer 3 device. Layer 3 device जब हम कहते हैं router को, इसका मतलब क्या होता है? It means that all the layers up to layer 3 are implemented inside it. Although we are calling it as a layer 3 device,
but the below layers, layer under layer 3 are also implemented in it. When we say that the layer 3 device, it means that layer 1 plus 2 plus 3 are implemented in it. ठीक है? You have to keep this terminology in your mind. कि जब हम कहते हैं कि राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ लेयर 3 राउटर में है. इसका मतलब ये लेयर 3 एंड बिलो लेयर्स आर आल्सो इंप्लीमेंटेड इन राउटर. ठीक है? इसी तरह स्विच जो है कौन सी लेयर डिवाइस है? 2. लेयर डिवाइस. So layer 2 device, which is a layer 2 device, it means that layer 2 plus 1 are implemented in it, right? So why we do less implementation? What is the benefit of implementing less number of layers? क्या benefit हो सकता है? सर रिसोर्स कम लगेगा यानी उसमें. जी सर जैसे आपने पहले बताया था लेयर इम्प्लीमेंटेशन एक रिसोर्स इंटेंसिव टास्क है, यानी उसके लिए ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होते हैं ज़्यादा लेयर लगाने के लिए. अगर कम लेयर लगाएंगे तो कम रिसोर्स चाहिए. Okay, yes, you can say in a loose way, but practically speaking आपका टाइम कम लगेगा, आपकी complexity सिस्टम की कम होगी. और हमें switch can work with 2 layers, there is no problem with it. Switch can work with 2 layers, so overhead आपका कम होगा, implementation complexity simple होगी, और there are many reasons which you can give, you know. overhead आपका कम होगा mainly, so time कम लगेगा processing के अंदर. So effectively time जो processing को required है कम layers के साथ वो कम होगा in comparison to higher number of layers. Okay ji, let me now give you a animation example that how here only one switch and one router is considered, but in this example we have only considered one switch and one router, but practically speaking there can be many switches and many routers in between source and destination, but concept remains same. So I'll show you the movement of the communication of data between source and destination with the help of animation. So let's have a look on animation. As I told you earlier, look at my cursor movement, that message is generated at source. Message is generated at source, so this is message. Source की application layer ने message को generate किया. ये मैसेज जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा. सोर्स के अंदर ये पांचों लेयर्स, माइंड इट, ये कंप्यूटर के अंदर पांचों लेयर्स इंप्लीमेंटेड है. ये मैसेज जनरेट होकर ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा. ट्रांसपोर्ट लेयर विल ऐड इट्स हेडर. हेडर जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो डाटा का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर सोर्स आप समझ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए डेस्टिनेशन की ट्रांसपोर्ट लेयर पे. और इसके अंदर क्या हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है, डेस्टिनेशन भी हो सकती है, कि एड्रेस हो सकते हैं, सोर्स के पोर्ट नंबर, एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म. हेडर की फर्दर डिटेल्स हम जब रेलेवेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो बहरहाल हेडर इज अ extra information which is added to process at certain layer. So when we add header, so it will become segment. Transport layer पे जो data unit कहा जाता है उसे कहते हैं segment. Application layer पे क्या कहते थे हम उसे? Message. Message. Now when you added header to the message, now it has become segment. H, T और M को मिला के जो बन गया वो segment बन गया. H, T का मतलब है H for header, T for transport layer. And then this segment will be given to next layer, which is network layer, right? And then network layer with also add its own header, and we call this header as HN. HN ऐड करने के बाद अब जो डाटा यूनिट बन गया नेटवर्क लेयर पे, डाटा यूनिट है उसे हम कहते हैं डाटाग्राम. We call it as डाटाग्राम, right? तो एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज था. एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज में हमने जब ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर ऐड किया. हेडर ऐड करने के बाद उसे डाटा यूनिट जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी आर कॉलिंग इट एज अ सेगमेंट, एंड देन इट इज गिवन टू network layer, and network layer added its own header and now it is known as datagram. ठीक है? This datagram will be given to link layer. So I hope you can guess कि link layer will add its own header HL. We are calling it as HL, and at link layer data unit name is frame. We call it as frame. Now please remember these terminologies. Application layer पे we call it as a message, transport layer पे we call it as a segment, network layer पे we call it as datagram, and at link layer we call it as
frame. We are calling it as, these are standard names. You have to keep these names in your mind, that these are the standard names, and you have to keep these names in your mind. Now this frame will be given, to this. Look at this. फ्रेम के बाद ये जो है, ये फ्रेम फिजिकल लेयर को दिया जाएगा. फिजिकल लेयर इन बिट्स को वायर पे ट्रांसमिट करेंगे. वायर पे ट्रांसमिट होने के बाद ये जो है स्विच के पास पहुंचेगा. ये एनिमेशन बड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन स्विच के पास पहुंचेगा. स्विच के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद ये राउटर पे पहुंचेगा. तो राउटर पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये चीजें स्विच में होंगी. अब राउटर पे जब ये पहुंचेगा, राउटर की फिजिकल लेयर में ये जो बिट्स को रिसीव करेगी, सिग्नल से बिट्स में रिसीव होगा, वो फिजिकल लेयर करेगी. फिजिकल लेयर रिसीव करने के बाद जो है राउटर पे इट विल गिव दिस फ्रेम टू लिंक लेयर. अब लिंक लेयर क्या करेगी? लिंक लेयर इसका बेसिकली लिंक लेयर इसका HL हेडर को रीड करके रेलेवेंट प्रोसेसिंग करेगी जो रिक्वायर्ड है लिंक लेयर पे. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. The link layer will do its processing by reading HL header at link layer, and after doing necessary process, वो processing क्या होगी? error detection है, error correction है, whatever it is, वो आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. But here for briefly it will do its processing, and then it will remove its header HL, and it will give it to network layer. Look at this. HL का header remove हुआ और ये network layer को दे देगी. अब नेटवर्क लेयर पे क्या होगा? नेटवर्क लेयर विल डू इट्स ओन प्रोसेसिंग यूजिंग HN की प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो है बेसिकली आपको दोबारा ये लिंक लेयर को देगा. नेटवर्क लेयर पे प्रोसेसिंग होगी यूजिंग HN राउटर के अंदर, एंड आफ्टर दिस इट विल अगेन गिव इट टू लिंक लेयर. लिंक लेयर दोबारा उसके अंदर हेडर अब ऐड करेगी. लिंक लेयर दोबारा उसको हेडर ऐड करेगी और उसे फ्रेम बनाएगी, और उसके बाद दोबारा वो फिजिकल लेयर को वो देगी. इज इट ओके जी? अभी तक कोई क्वेश्चन और पूछें? I'll give you 1 minute to review this, and if you have any question so far, please ask.
Okay जी, any question? If you have any question, किसी को Excuse me, question है sir. तो जी प्लीज। सर ये जो लिंक एड्रेसेस और नेटवर्क एड्रेसेस हैं, मतलब ये सब डिवाइसेस के डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? बेटा ये डिफरेंट होते हैं। ओके सर। लेकिन अभी हम इन पे डिस्कस करेंगे, अभी तो फिलहाल एड्रेसेस पे हम आए नहीं हैं। अभी तो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन लेयर पे डाटा यूनिट को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सर मैसेज। Then who will tell me what is the name of data unit at transport layer? Anyone सेगमेंट। else? सेगमेंट। Okay. Then at network layer we call it डाटाग्राम। डाटाग्राम। and then we have link layer पे क्या कहते हैं उसे? फ्रेम। फ्रेम। Okay जी, if you don't have any question, so eventually it will received at destination. Now destination will do the same process कि link layer की processing HL को use करते हुए करेगी और इसके बाद it will give it to link layer network layer को देगी. Network layer will do its own processing using HN and then it will give it to transport layer. Transport layer will do it processing using HT and then it will give it to application layer and eventually it arrives at destination. Eventually it arrives at destination और इसके बाद यूजर को जो है वो मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा. So in this way communication is done. So you have to keep this thing in mind that at source encapsulation of headers are done. Headers are added and at destination headers are removed. ठीक है, headers are added at source at various layers and headers are removed at destination. But as far as routers and switches are concerned, इसमें क्या होता है? Header add होते हैं या remove होते हैं या दोनों होते हैं? सर दोनों होते हैं। लिंक के ऊपर हेडर रिमूव होगा, नेटवर्क से वापस जब आएगा तो दोबारा उसके अंदर हेडर ऐड करेंगे। राइट, दोनों। जी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों काम जो है रोटर और स्विच पे दोनों काम होते हैं, हेडर रिमूव भी होते हैं, ऐड भी होते हैं. तो कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड्स. ओके, so this is how communication is done. If you have any question related to overall to this, so you are welcome, otherwise this completes this topic. किसी को कोई question है तो you can ask. So this is a very important slide in this sense कि ये overall communication का concept देती है. अगले चैप्टर से हम नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर, उसमें हम अब एप्लीकेशन लेयर की बातें करेंगे. लेकिन ओवरव्यू के लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 1 ये ओवरऑल आपको नेटवर्क की ओवरव्यू देता है और इसमें स्पेशली ये स्लाइड बताती है कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होती कैसे है. ऑल्दो इसमें एक स्विच और एक राउटर लगा हुआ है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग there are multiple switches and routers and same thing happens again and again in every router and switch. सर ये स्विच के केस के ऊपर जब फिजिकल लेयर के ऊपर हमारे पास आएगा फ्रेम आएगा तो सर वो लिंक की लेयर के अंदर जाएगा तो सर उसका जो लिंक का हेडर है वो रिमूव होगा, प्रोसेसिंग होगी और फिर लिंक का हेडर ऐड करके उसे राउटर की फिजिकल लेयर पे भेजेंगे. हाँ जी, ऐसे ही होगा क्योंकि लिंक के असल में होता ये है कि लिंक, अब ये बड़ा डेलिकेट सा डिफरेंस है क्योंकि आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हेडर के अंदर कुछ फील्ड्स चेंज हो जाती हैं. हेडर के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं तो कुछ फील्ड्स चेंज हो जाती हैं तो वो फिर इसलिए नया हेडर जो ऐड किया जाता है, नई वैल्यू ऐड की जाती है बास फील्ड्स में. ओके जी, इज इट ओके? यस सर. एनीवन एल्स having any question please go ahead. आप में से बहुत कम लोग क्वेश्चन पूछते हैं. I would encourage you to ask questions. अगर ये स्विच के अंदर से लिंक की लेयर निकाल दें, खाली फिजिकल लेयर बच जाए तो ये हब बन जाएगी. जी, हब बन जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है. रिपीटर भी कहते हैं, हब भी कहते हैं. उसमें लेयर 1 डिवाइस होती है. जनरली आजकल हब यूज नहीं होते प्रैक्टिकली स्पीकिंग.
हब जो है वो सिर्फ सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है, रिपीटर भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है कि अगर आप लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो दरम्यान में इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल वीक हो जाता है, तो रिपीटर आप लगा के लॉन्गर डिस्टेंसेस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज अ लेयर 1 डिवाइस। Okay, Ji, I hope that you have understood it. If you have understood it, let's do some review questions related to this topic. So this is a review. So please recap. I'll show you the answer, but take 2-3 minutes to find out the answer in your own mind. क्या आंसर हो सकता है इसका? And then I'll show you the. We'll discuss the answer for it. This is a recap of the concept which we have studied. In fact. So I'll explain you briefly explain that what types of functions each layer can do. सर ये एनालॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि क्या लेयर टास्क कर सकती है या फिर कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में? नहीं, अब एनालॉजी को हम जो है छोड़ देंगे और मैं बेसिकली अब लेयर्स के नाम और जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो है, बाकी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन में कि और क्या क्या होता है। फिलहाल आप अपने जहन में लेयर्स लाएं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ये अपने जहन में लाएं जो हमने पढ़ा है। ये प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं, टास्क के बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बताता हूँ क्या क्या टास्क होते हैं, तो कितनी लेयर्स होती हैं वो विल डिस्कस। ओके, लेट्स डिस्कस इट ऑन एनीवेज। सो दीज आर द जेनरिक टास्क्स। अभी मैंने एरर की बात की थी सिर्फ, लेकिन अभी मैं अब आपको और चीजें बताता हूँ कि जो जेनरिक टास्क्स हैं जो लेयर में हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट थिंग इज एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है कि देखिए आप जब आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो आपका इंटरफेरेंस की वजह से इसमें एरर आ जाता है। अब उसके अंदर एरर जब आता है तो रिसीवर साइड पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। error detection and correction. So collectively we call this as phenomena as error control. Error detection के अंदर क्या होता है कि error detection के अंदर आपकी डाटाग्राम है लेट्स से, तो आपको ये पता लग जाता है कि डाटाग्राम के अंदर एरर मौजूद है, but you don't know the location of error. This is known as error detection. You know that arriving datagram has an error, but you don't know the location of error. This is known as error detection. एरर करेक्शन के अंदर ये होता है कि आपको लोकेशन ऑफ एरर भी पता लग जाती है। अगर फ्रेम देखें, एक फ्रेम है या डाटाग्राम है, उसके अंदर 100 बिट्स हैं, 1000 बिट्स हैं, तो अब 1000 बिट में अगर आपको पता लग जाए कि कौन सी बिट एरर में है तो आप क्या करेंगे। बिट में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या 1 है या 0 है। तो अगर आप बिट लेट्स से 100 बिट आपकी एरर में है तो वो 1 है तो उसको 0 कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज कलेक्टिवली दिस इज नोन एज एरर कंट्रोल। ओके जी, इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? Well, assume you don't have any question, then next task is flow control. सर जी सर ये जो टास्क हैं सर ये लेयर के साथ फिक्स हैं या फिर ये यानी हर लेयर के अंदर होंगे? बेटा ये मैं आपको जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर 2 से ऑनवर्ड फिर बताऊंगा। अभी तो ये जेनरिक टास्क हैं, ये कुछ रेप्लिकेट होते हैं लेयर्स में और कुछ जो है सिर्फ एक लेयर में ही होते हैं, इंडिविजुअल लेयर में ही होते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहे कि ये टास्क किस किस लेयर में होते हैं। ये आगे जब हम इंडिविजुअल लेयर हर लेयर पढ़ेंगे, हर लेयर पे एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आपको बड़ी चीजें पता लगेंगी। तो फिलहाल हम जो जेनरिक टास्क पढ़ रहे हैं जो किसी भी लेयर पे हो सकते हैं। इज इट ओके जी? यस सर। सो देन फ्लो कंट्रोल। दिस फ्लो कंट्रोल मींस कि आपका जो
लेट्स से कि आपका एक सेंडर है वो बड़ा फास्ट है और रिसीवर क्या है वो स्लो है, तो अब अगर फास्ट सेंडर बहुत ज्यादा डाटा भेज देगा स्लो रिसीवर को, तो क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होगा? सर इंफॉर्मेशन लॉस होने का खतरा हो सकता है ना? ये इंफॉर्मेशन लॉस होगी क्योंकि रिसीवर की बफर की एक कैपेसिटी है, उसके पास छोटा सा बफर है। आप डाटा जो है बहुत ज्यादा फास्ट सेंडर भेज रहा है तो ऑब्वियसली वो रिसीवर के अंदर इंफॉर्मेशन लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो फ्लो कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म व्हिच helps the slow receiver to inform the fast sender to send data according to its speed। तो ये ओवरऑल जो मैकेनिज्म इस चीज को करता है उसको हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। The third generic task is known as segmentation। अगर आपका एक नेटवर्क है उसके अंदर से बड़े बिग साइज डाटाग्राम्स नहीं पास कर सकते तो हम उन बड़ी डाटाग्राम्स को छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। उन छोटे पीसेस को डिवीजन करने के फिनोमेना को सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज सेगमेंटेशन। डिवाइडिंग द बिग डाटा यूनिट्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज नोन एज सेगमेंटेशन। और नेचुरली जब वो सेगमेंटेशन होगी तो अदर साइड ऑफ द नेटवर्क उसको दोबारा रीअसेंबल करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रीअसेंबलिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का वही फिनोमेना जो आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पे पढ़ा है कि मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आ रहा है और उसको सिंगल लाइन पे आपने भेजना है। एंड ऑपोजिट डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होगी अदर साइड पे। And some networks require connection setup. Some layers also require some connection setup before transfer of data. This is another task which is done, that you have to establish a connection before transfer of data. So these are the 5 generic tasks, and these tasks can be duplicated at different layers. For example, error control is often provided in more than one layer. Exact detail हम forthcoming chapters में पढ़ेंगे कि कौन सा टास्क किस लेयर में होता है और क्या उसकी कैसे होता है, वो बड़ी डिटेल पूरा चैप्टर है तो उसमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे। Is it okay? Please go through this answer, and if you have any question, you are welcome. Yes, sir. Okay, Ji. If it's okay, now this is the answer which you can answer. This is a question which you can answer. What is the application layer message? What is the transport layer segment? Network layer datagram, link layer frame. सर एप्लीकेशन लेयर का मैसेज तो सर वो पैकेट होगा ना? नहीं, पैकेट नहीं इसे पैकेट नहीं कहते बेटा इस कॉन्टेक्स्ट में। पैकेट, वैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बताता हूँ, पैकेट एक जेनरिक टर्म है। ठीक है, पैकेट एक जेनरिक टर्म है, चंक ऑफ बिट्स को पैकेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन हर लेयर पे जो डाटा यूनिट हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो डाटा यूनिट है वो मैसेज है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट है, नेटवर्क लेयर पे डाटाग्राम कहते हैं, लिंक लेयर पे उसे फ्रेम कहते हैं। ठीक है, और बाज बुक्स में, ये मैं आपको बता दूं, बाज बुक्स में नेटवर्क लेयर के डाटाग्राम को पैकेट भी कहते हैं। इसलिए पैकेट कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन पैकेट जो जनरल नोन अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रुप ऑफ बिट्स इज नोन एज पैकेट, चंक ऑफ बिट्स।
Okay, ji, let's have a look on the answer. Please go through this answer, and if you have any question, you are welcome to ask. ओके जी, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज वेलकम. If no, let's move to further. So next question, which layer in internet does a router process? Yeah, I think it's not a difficult thing. सर राउटर जो है सर वो फर्स्ट स्विच जो है 2 लेयर्स को करता है. ओके. और सर होस्ट जो होता है, डेस्टिनेशन जो होती है सर, उस पे ऑल 5 लेयर्स प्रोसेस होती है. ओके जी. So anyone else would like to comment? सर स्विच जो है वो लेयर 2 को करता है, फर्स्ट 2 लेयर्स को. होस्ट जो है वो 5 लेयर्स को करता है. होस्ट 5 लेयर्स को करता है. ओके राइट. ओके जी, so you are right. Have a look on it. Okay ji, any further question? Okay, if no, then let's move to the last topic of today's lecture and last topic of this chapter.
and that is history of internet, a brief history of internet. So I will not go in a very much detail of it, but again, you need to understand the history of internet too. So this is a brief history. So internet started actually in 1961 when Klein Rock gave a theory which shows the effectiveness of packet switching. And then Barron, in fact, in 1964, proposed a network which is a packet switching network in military networks. Actually, at that time, there was two superpowers at that time in 1960s, and the only network available at that time was telephone network. So telephone network was a point-to-point network. Means that if one link goes down, then the communication between, let's say, two cities goes down. So there were no multiple paths available on it. So this was the main reason for inventing internet. So Barron gave the first idea that in military networks you can have a packet switching which have multiple paths, and if during war, if one path goes down, communication can go from alternate paths. So this is something which is there. So consequently, in 1967, a network was conceived, and that was known as ARPANET. ARPA is the abbreviation of Advanced Research Project Agency. This is a US based. So internet was invented in USA, so that's why these terminologies are US based. In 1969, first ARPANET was became operational, and in 1972, ARPANET was given a demo, public demonstration, and network control protocol was initially used between host to as a first host to host protocol. And at that time, the first program which is used was email, and at that time, ARPANET was initially consist of 15 nodes. So the right side is a figure of that ARPANET. So you are seeing here, this is the nodes, these are the nodes, and these are the communication. This is the first network. Then between 1972 to 1918, 80 new protocols came in, and in 1970, a network which was known as Aloha network was, uh, devised in Hawaii. Hawaii is a unit of that, province, or you can say state of USA, and that Hawaii consists of many islands. So their wired network is not possible. So therefore, they have used a satellite network, wireless network, to devise a network, and that was known as Aloha network. And in 1974, the first architecture was proposed. TCP/IP was proposed by Surf and Khan. So they were the first two protocols which were invented in 1974. And in 1976, Ethernet was invented. And then there were some architectures which were proposed by in proprietary architectures which were proposed. And similarly, ATM is a asynchronous transfer mode. This is a oriented network, and this was proposed in 1970s. So eventually ARPANET grew, and in 1972 it has 200 nodes. Again, initially ARPANET was having only 15 nodes. Now in 1979 it became to 1500 nodes. Further internet history talks about deployment of TCP/IP in the network, and this is a brief history. In 1982, email came in, and then DNS, which we'll study in chapter 2, was proposed in 1983. DNS was named to IP translation a protocol. Then file transfer protocol came in 1985, and then TCP congestion control algorithm came in 1988. These are the milestones that there are many networks came in during this period. 100,000 hosts connected to Confederation of Networks. This is a diagram of NSFNet. NSF is a National Science Foundation network. National Science Foundation is a USA network organization. So this is NSFNet in 1991. This was the situation. So this is a map of which country? नॉर्थ अमेरिका USA. यूएसए का मैप है, ठीक है। ओके जी,
And then we have further changes in it. Uh, ARPANET has a restriction कि अगर आप ARPANET के अंदर नोड लेना चाहते हैं तो आपको ARPA जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा. So every university was not able to devise a contract. So therefore, NSF came in. NSF National Science Foundation. So ARPANET was decommissioned in 1990. और NSF ने जो commercial use पहले initially commercial use allow नहीं था network का, वो restriction 1991 में NSF ने उठा ली. उसके बाद जो है आपकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई इंटरनेट में. और 1990s में वेब इन्वेंट हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब. जो वेब पेजेस आप देखते हैं ये हुआ, ये वेब जो इन्वेंट किया टिम बर्न्स ली ने. ये ही वाज अ साइंटिस्ट एट सर्न लेबोरेटरी एट स्विट्जरलैंड. सो ही इन्वेंटेड HTML एंड HTTP. एंड 1994 में दुनिया का पहला ब्राउजर आया जिसका नाम था मोजाइक. लेटर ऑन नेटस्केप ब्राउजर था आया. And you can say that in late 1990s commercialization of web started, जब commercial use का internet का allow किया गया. And there are many killer apps came in. P2P file sharing आई, instant messaging आई between 1990 say 2000 तक. Network security became forefront issue. And at that time there were around 50 million hosts at that time. And 100 million users. Okay ji. And then 2005 to present, internet is everywhere. So 5G 4G networks अब आ गए हैं. Emergence of online social networks. Facebook is having around 2.5 billion users. So imagine the size of Facebook. So service providers, Google, Facebook, create their own networks, and they bypass commercial internet to bring their content user close to end user. And now cloud computing has become a big feature of today's internet. Okay ji, if you have any question, welcome. सर आजकल जो इंटरनेट यूज होता है सर, ये NSF का है या फिर ये गूगल फेसबुक अपने? नहीं NSF. अब NSF देखें, इनिशियली जब इंटरनेट था तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था, लेकिन NSF अब नेट भी खत्म हो गया. अब जो इंटरनेट है इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. So internet is the collection of small networks, internetwork, और each network is controlled by different organizations. ठीक है. और different organizations are connected to each other by various ISPs. वो इंटरनेट का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो अब NSF नेट का कोई वजूद नहीं है, खत्म हो गया. अब इंटरनेट इज अ प्राइवेट एंटिटी. इंटरनेट इज कंट्रोल्ड बाय ISP. नो सेंट्रल अथॉरिटी टू कंट्रोल अ इंटरनेट. ISPs हैं, ISPs के साथ डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड है. ठीक है. रिकॉल द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट. इज इट ओके जी? यस सर. तो अब कोई वजूद नहीं है NSF नेट का. ये इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी पर्सन, ऑल द इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय सिंगल पर्सन और एंटिटी. डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओन करती हैं, और आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है? थ्रू द ISPs. So this is a summary of chapter 1. We have covered a lot of material. We have started with internet overview. Then we studied WhatsApp protocol. Then we talked about network edge, access network, core network. And then we discussed packet switching versus network switching, and we studied internet structure. Then we talked about loss, delay, and throughput, layering, service model, security, history. All these things we have discussed. So this completes chapter 1. So if you have any question, you are welcome to ask from all the chapter 1.
I'll give you 2 minutes for it कि रिव्यू अपने जल्दी से वो सॉफ्ट कॉपी, आई होप सबके पास सॉफ्ट कॉपी है चैप्टर 1 की, तो उसको गो थ्रू क्विकली करें 2-3 मिनट में। और किसी किस्म का क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वी विल आल्सो हैव अ क्विज, तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, ब्रीफ क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। So I'll give you 2-3 minutes for it. एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज पूछे। सर वो क्विज एक वीक डिले नहीं हो सकता? बेटा स्टूडेंट्स डिले नहीं हो सकता, आपके 4 क्विज होने हैं, आप कैसे डिले करवाएंगे? आपकी हर चीज आगे डिले होती जाएगी, आप बात समझे हैं। हर चौथे वीक में आपका क्विज होगा, फिर आप कहेंगे जी ये क्या हो गया, तो चौथे वीक में क्विज होगा, एक 8वें वीक में होगा, एक 12वें वीक में होगा, एक 16वें वीक में होगा। तो ये अपनी चीजें जहन में रखें। आप डिले करेंगे तो आपकी चीजें फिर सारी आगे डिले होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो सर एक्चुअली वीक 4 नेक्स्ट वीक में ना हमारा जो है ना वो ईसीडी का भी क्विज था ना, तो वो उसमें उसका भी बेटा बहुत इसी सारा तरह है, जिंदगी इसी तरह है। नेक्स्ट टाइम कब ईसीडी की क्लास किस दिन होती है? सर मंडे। बेटा तो फिर आप कहेंगे जी सर 5 कोर्स हैं, 5 कोर्सेज का मंडे को होता है ना, तो ये तो वेडनेसडे को, नेक्स्ट टाइम क्लास वेडनेसडे को होगी और वेडनेसडे को होगा। पेपर भी तो होते हैं ना यार, पेपर भी तो देते हैं। इस तरह ना सर करें, नेक्स्ट ये टाइम सारे स्केड्यूल जो है ना सर वो सर सिर्फ इस वीक का क्विज जो है वो वीक 5 में ले लें, बाकी एज स्केड्यूल पे ले लें। नहीं प्लीज नहीं, वीक 4 में ही होगा क्विज, वीक 4 में ही होगा। ये सारी जो है ना चेंजेस ना करें, आप ईसीडी का चेंज करा लें अगर आपको बहुत है तो, ठीक है। ओके सो देयर विल बी नो चेंज। ये अब आपको अपने ऑनलाइन के साथ अपने आप को यूज टू करें, और ये डे 1 से जो है चीज़ों को आप इस तरह लें, आप स्केड्यूल को चेंज मत करें प्लीज, ठीक है। डू योर बेस्ट। अभी मैंने पूरा एक वीक है आपके पास, और आपको मैं साथ साथ हमेशा कहता हूँ कि साथ साथ पढ़ा करें, ठीक है। तो वी विल हैव क्विज नेक्स्ट वीक। ओके जी, बाय दिस आई थिंक